Hello everyone, good evening. So we are going to discuss on a very important topic, romantic criticism. हमारा जो सिलेबस है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो इंग्लिश लिटरेचर का जो हमारा सिलेबस है उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं. तो उसमें कई सारे टॉपिक्स जैसे है पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, क्रिटिकल एसेज आर देयर. तो उसमें कई सारे एसोसिएटेड आइडियाज़ आया, क्रिटिकल व्यूज़ है जो शायद उसमें मेंशन्ड नहीं है, बट दोज व्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट. जैसे किट्सेस के ओड्स हैं लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी मेंशन्ड नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वर्ड्सवर्थ के एक दो पोएम है लेकिन उसमें वर्ड्सवर्थ का जो रोमांटिक थियोरी है वो मेंशन नहीं है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये क्रिटिक ने ये बोला गया था, किसके ऊपर बोला गया था, ये जो रिमार्क है ये कौन बोला था, किसके बारे में, कौन से टेक्स्ट के बारे में. सो दैट्स वाई रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस class romantic criticism, I invite you to KTS Academy and enroll yourself as soon as possible because we are continuing our class in assistant professor CGPSC AP, which the exam is going to come very soon. तो जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आप लोग एनरोल हो जाइए और हम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे. जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसमें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए बिकॉज वी आर डूइंग आवर क्लासेस ऑन ए रेगुलर बेसिस. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास. एक सेकेंड. So, romantic criticism. So, आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आई विल टच अपॉन द इम्पॉर्टेंट क्रक्स, द इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट क्रिटिकल पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट. ठीक है, ओड, पोइट्री, ड्रामा, ट्रेजेडी, नॉवल, क्रिटिकल एसेस वो सब तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा जो क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रेलिवेंट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि मैं बताया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रिमार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू रीड दीज पोर्शंस केयरफुली एंड स्मार्टली. ओके, सो वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज दे talked about romantic theory. Because when we read romantic literature, romantic poetry, there comes another phase, romantic criticism. Because there were a number of romantic theorists and romantic critics. Wordsworth was not just a romantic poet, he was a very powerful romantic theorist. Okay, in 1798, 1800 and 1802, he wrote preface to lyrical ballads with Coleridge, in collaboration with Coleridge. And in that book, he said, what is poetry? That poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. मतलब poetry should be the language of the common man. Okay, क्योंकि romantic पीरियड के पहले कौन सा पीरियड था? नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिसिज्म, जहाँ पे ड्राइडन, पोप एंड जोनाथन, व्हाट्स हिज नेम, सैमुअल जॉनसन. ओके, स्पेशली ड्राइडन एंड पोप, दे फोकस मोर ऑन द फॉर्म, एक मोर ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर, नॉट व्हाट इज इनसाइड, रादर व्हाट इज आउटसाइड. ओके, जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि मैकफ्लेक्नो, तो द सैटायर, द वेरी फॉर्म सैटायर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. द मॉक एपिक स्टाइल
became very important, not what is there in the text. Okay, the story of rape of the lock is not important, but the mock heroic style becomes more important. So these neoclassical authors focus more on the form, more on the outside, but the romantics came with a different philosophy. They think that what is outside is artificial. Many critics, many romantic critics say what is outside is artificial. What is more important is the inside the text. That's why they find quality, importance in imagination, in personal experience, in subjective self. Okay, these are the prime qualities which romantic theorists led. ठीक है? So the romantic theory about poetry should be the language of the common people. Okay, it should be legible, easy language होना चाहिए, not very form oriented, not very mechanical oriented. Every common man, every common person must understand and enjoy the romantic poetry. That's why Wordsworth says language of the common people for poetry. But Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, he said something else. है ना? तो थियरी क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कोलरिज का दूसरा थियरी है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. ही बिलीव्स, he quote unquote, he defined poetic faith. He defined poetic faith. He talks about faith. What kind of faith? Faith to suspend your physical ideas. Willing suspension of disbelief. You have to disbelieve what is not real. Then you can escape and enjoy a different world of imagination. You remember the rhyme of the ancient mariner? There is no supernatural element, but the way he presents the natural phenomena, he presents them in such a way that it becomes magically supernatural. Okay, so for that the reader has to willingly suspend his beliefs, and then it would be possible. So that was his theory, which he applied in most of his poetry. है ना? आगे बढ़ते हैं. In Shelley we see, Shelley was writing a defense of poetry, which was published in 1821, and he says poetry gives eternal truths, universal truths. It also gives moral progress. Only Shelley talks about this, that eternal truth, moral progress hota hai, okay, through poetry. This is a defense. ये जो है a defense of poetry, ये किसका defense है? In his contemporary time, romantic age में ही, there was a romantic critic, Peacock, Thomas Love Peacock was one of the important romantic critics. He wrote a book, The 4 Ages of Poetry, very very important. Peacock के remark से question आता है. Thomas Love Peacock said in the 4 ages of poetry that poetry doesn't give any eternal truth at all. And Shelley responded him in this particular book. That's why he said a defense of poetry. It is Shelley's defense to the book The 4 Ages of Poetry by Peacock. That's why it is called defense of poetry. Okay, so a defense of poetry by Shelley is a response to Peacock's The 4 Ages of Poetry. ठीक है? Now John Keats, negative capability. He found importance in the negative capability. John Keats बहुत letter लिखता था to his brothers, okay, George and Tom, and in one of the letters he discussed in much greater detail about negative capability. What is negative capability? Negative capability क्या होता है? So it's a process. He says that
You have to embrace, you have to enjoy the uncertainties and the mysteries of life without needing for any facts or reason. हमें लॉजिक या रीजन के पीछे हमेशा दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा भागना नहीं चाहिए. ओके, सो फॉर रोमांटिक पोइट्री कीट सेड नेगेटिव कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है टू एंजॉय, टू एस्केप द फिजिकल ड्रेजरी ऑफ दिस लाइफ. जहाँ पे किड्स इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, किड्स इज body is deteriorating, kids' younger brother Tom Kids died, and in the society there was disillusionment. Okay, fake promises proved false. Okay, French Revolution में क्या promise था? Liberty, equality, fraternity, but nothing proved at all. Nothing proved true. Everything became false. And kids wants to escape like other romantic poets. All the romantic poets wanted to escape, and they wanted to find an alternative world through their imagination, है ना? So negative capability क्या है? It is a device through which one should embrace uncertainties and mysteries of life without looking for logical understanding. Then that's why negative capability becomes very irrelevant. Okay, so these are some of the romantic criticism, romantic theorists who contributed in the romantic literature. ये जो भी critical aspects है ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. Okay, then you see Lord Byron in Childe Harold's Pilgrimage or Don Juan, he says that we have to expose the hypocrisy and rigid social norms. Okay, so what is more important for Byron? Individualism. We have to stand on our individual talent. Individualism, satire and defiance against tradition. Don't follow tradition, don't follow rules and regulation, don't follow neoclassical tradition precisely. ठीक है? So Lord Byron is one of most revolutionary, and second to Byron is Shelley. He is also revolutionary, but Byron is too much. He is rebellious. Childe Harold's Pilgrimage and Don Juan, he defies tradition. He doesn't want any kind of rule to follow. So these are the critical ideas, these are the critical approach towards poetry, towards romantic poetry. So यहाँ से कई सारे questions आ सकते हैं. Then see dequency, very very important for our exam. Exam के लिए ऐसे ही question आते हैं. Thomas de Quincey, you remember मैकबेथ हालांकि हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक लिटरेचर है. Thomas de Quincey was giving something additional, something new to the romantic literature. क्या? Thomas de Quincey wrote some major works. I have picked up two. Number one, On the Knocking at the Gate in Macbeth. On the Knocking at the Gate in Macbeth. So in Macbeth there is a scene. Okay, in Macbeth there is a scene, and Macbeth is under high tension because Macbeth has murdered his king Duncan, and Macbeth is afraid of his life that if somebody knows about my deed, about my regicide, Raj Hatya, then nobody will spare me. Everybody will come and kill me to death. So at that time Macbeth was under high tension, high crisis, mental crisis, and suddenly there was a knocking at the door. Maybe especially the potter, I think, or some servant knocks at the door. So that's one point, that physically somebody knocks at the door, that is there. But Thomas de Quincey finds a psychological importance to this small scene. Psychological importance. See,
psychology became popular, became relevant in 20th century with the arrival of Sigmund Freud. He was a psychologist. He was a Swiss psychiatrist. I'm sorry. He was a Swiss psychiatrist. But we find psychological analysis by De Quincey. The piece is here in the Romantic Age. Thomas De Quincey's piece on the knocking at the gate in Macbeth. So that knocking is not just physical, it is mental also, because the moment the servant knocks at the door, Macbeth is getting afraid too much, so much. So Macbeth was in a kind of state of dilemma. He is lost in his own dangerous thoughts, but suddenly he wakes up back to his consciousness. So this metaphorical sound, bell knocking, is a kind of that Macbeth comes to his own consciousness. So look at the importance that Thomas De Quincey finds even in this small scene, bell knocking. So that shows what is inner, what is psychological, what is inner experience. That's what romantic critics look for, not the outward rules, regulations laid down by the classical masters and followed by the new classical writers. No. They look into the inner experience, the very deep-seated inner experience. And also Confessions of an English Opium Eater, another important piece by Thomas De Quincey. Walter Pater, another. When we read Coleridge as a poet, as a master of naturalism versus supernaturalism, at that time, Coleridge, to understand Coleridge, we have to understand Walter Pater as a romantic critic. Walter Pater, in the history of the Renaissance, he believed that art should prioritize beauty over morality. He talks about aesthetics. Aesthetic philosophy should not think about moral scruples. Moral issues के बारे में नहीं सोचता है art. That's the revolutionary attitude Walter Pater has. अगर आर्ट को फ्री करना है, आर्ट का फ्रीडम चाहिए, तो इट शुड नॉट बी बाउंडेड बाय एनी क्लच like this morality, religion. No, it must be free to achieve aesthetic success. That was the Pater's view, Walter Pater. He is a romantic critic. Next come Hazlitt, very, very important romantic critic. Okay, Hazlitt, William Hazlitt in the Romantic Age. William Hazlitt wrote characters of Shakespeare's plays and on the spirit of the age. He says he is the one, he is the first romantic critic who directly says we should reject neoclassical rigidity. Neoclassical form को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है. We should focus on the personal expressions, personal experience, subjective experience, self, individual self. These are the qualities, imagination we should follow. Okay, so he wrote in characters of Shakespeare's plays. He found the personal experience of Macbeth, Hamlet, King Lear, the subjective inner experience that are coming out through their personal expressions. Subjectivity and personal expression, and criticizes neoclassical silos, S-I-L-O-S, silos. Silos means boundaries. Neoclassical rules and regulations. No. ठीक है? Now you see some other romantic critics' views. Matthew Arnold. Okay, before I say Matthew Arnold, can you tell me, who is the last romantic? Who is the last romantic? W.B. Yeats.
called himself, he professed to be the last romantic. In the poem Kul Park in Belili, in that poem he says himself, I am the last romantic. Okay, so that's the point. For important question ho sakta hai. Coming back, Matthew Arnold, the study of poetry, he says poetry is the criticism of life. How you understand this? Through your experience, through your personal subjective experience, you can share this thought. Okay. So romantic poetry emotionally powerful but lacking intellectual depth. So there is more important idea on the study of poetry. Matthew Arnold, though he Victorian poet also, so Matthew Arnold says it is powerfully emotional. There are emotional experience coming out, but at the same time he finds intellectually lacking. That is also important. It's not that Matthew Arnold is criticizing romantic poetry, but rather he finds the beauty as well as an intellectual lack into it, जो बहुत important है हमारे एग्जाम के लिए. M.H. Abrams, इनका तो नाम हम लोग सुने ही है, BA और MA English literature student know M.H. Abrams, a glossary of literary terms. We are well aware of his book. कभी भी लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करना हो तो वी ऑलवेज रेफर दिस बुक, हिज बुक, लेकिन हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं. M.H. Abrams, we are looking M.H. Abrams as an important critic who says many important things on romantic poetry, romantic literature. In his book The Mirror and the Lamp, he says romanticism as expressive aesthetics, emphasizing imagination and self-reflection. He says that romantic poetry is self-reflective. It reflects your personal experience. It is aesthetic. You cannot find aesthetic in form. According to the romantics, that you cannot find aesthetics in form. For aesthetics, you have to deep down into the world of imagination, into the world of inner experience of the subject, of the individual. Harold Bloom, in his Anxiety of Influence, that romantic poets struggled with their literary predecessors, reinterpreting earlier works to assert their creativity. Harold Bloom बहुत अच्छा कुछ नहीं बोले हैं about romantic poetry, but his statement is very important. His statement is very groundbreaking, बहुत ही challenging, unconventional statement है. He says Anxiety of Influence, ये इनका बुक है जो पब्लिश हुआ है 1973, मतलब 20th century critic. Sort of he criticized on romantic poetry. He says मतलब अगर हमें रोमांटिक पोइट्री पढ़ना है तो एक एंग्जाइटी काम करता है हमारे दिमाग में एज ए रीडर. मतलब जॉन कीट्स पढ़ना है तो मुझे उनका बायोग्राफिकल डिटेल्स जानना पड़ेगा, उनका पर्सनल पोइटिक कैरियर जानना पड़ेगा, और सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक क्या क्या बैकग्राउंड है वो जानना पड़ेगा. देन आई विल बी एबल टू रीड द पोएम. बट अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम, ही सेज दिस इज एन एंग्जाइटी. इतना एंग्जाइटी हमें, इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट रोमांटिक एज क्या है वो पता ही नहीं है और हम पढ़ने गए तो वो कैसा होगा, तो हैरोल्ड ब्लूम सेज डोंट रीड बैकग्राउंड. जो न्यू क्रिटिसिज्म का बात किया था मैं पिछले मेरे क्लासेस में, न्यू क्रिटिसिज्म, दैट न्यू क्रिटिसिज्म क्या बताता है कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, डोंट रीड biographical details, socio-political influences, don't go for this, just read the words on the page. जो दिख रहा है, जो टेक्स्ट है उसी को पढ़ो, and try to explore meaning that readers will do. That was the view. तो वो एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए कि जॉन किट्स को पढ़ना है तो ये सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समेटना है पूरा, तब हम समझ पाएंगे. That is a different approach.
And Harold Bloom's approach is different, new critical approach, new criticism फॉलो करके जो, इसीलिए उनका ये बुक है द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि देयर इज एन एंग्जाइटी इन द माइंड ऑफ द रीडर दैट वी हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स. हमें थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा तो ही हम इस पोएम को पढ़ पाएंगे. तो ये जो बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा, ये जो एंग्जाइटी काम करता है, दैट ही सेज दैट्स नॉट गुड फॉर ए पोएटिक माइंड. डोंट गो फॉर दिस, जस्ट रीड द टेक्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड न्यू मीनिंग्स फ्रॉम योर ओन. इसीलिए कि द रोमांटिक पोएट स्ट्रगल्ड विद द लिटरेरी प्रेडेसेसर्स इन रीइंटरप्रेटिंग अर्लियर वर्क्स टू असर्ट देयर क्रिएटिविटी. तो रीइंटरप्रिटेशन करना, ये जो चीज़ें हैं, दिस इज काइंड ऑफ एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. So don't get influenced by socio-political surface background. Just have a close reading. But if you see romantic poets, most of the romantic poets always look for close reading of the text. The rhetorical devices that they used, जिस प्रकार का rhetorics used होता है, metaphors, alliteration, especially metaphorical expressions. So undoubtedly romantic poetry always look for close reading of the text in our experience. Okay, लेकिन we have to know his statement which is important. ये बुक बहुत important है. जब हम कोई मॉडर्न लिटरेचर का कोई पार्ट पढ़ेंगे, मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न पोइट्री हो, मॉडर्न ड्रामा हो, तब हैरोल्ड ब्लूम का जो थॉट है उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए KTS एकेडमी में. नंबर आपको दिख रहा होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में. यू कॉल एंड टेक योर एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल. ओके, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग आवर क्लासेस एंड CGPSC AP इंग्लिश एग्ज़ाम इज कमिंग वेरी सोन. तो जल्द से जल्द एनरोल होकर एडमिशन ले लीजिए. ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर्स ऑल्सो जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा और अच्छे से. चार्ल्स लैम्ब का क्या व्यू है, जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या व्यू है, राइट. तो दीज आर द आइडियाज दैट वी हैव टू नो. सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के जो सिलेबस में जो पोएम है, एसे है, ड्रामा है, उसका टेक्स्ट पढ़ के ही खत्म हो जाएगा. नो, वी हैव टू रीड अबव द सिलेबस. मतलब सिलेबस में नहीं है ऐसा नहीं है, सिलेबस में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंटली प्रेजेंट है. एंड वी हैव टू कैच दोज एब्सेंटली प्रेजेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो रोमांटिक किड्स ओड सारे ओड्स है, लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं है. तो मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और एग्ज़ाम में ना ऐसे ही क्रिटिकल रिमार्क से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है. मैं टॉमस लव पीकॉक का बात कर रहा था, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री. ही क्रिटिसाइज रोमांटिक पोइट्री, इरेशनल, सेंटिमेंटल, ये भी क्रिटिसाइज किए थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा किड्स के पोएम को, एंड मेनी अदर रोमांटिक पोइट्स एज वेल. ठीक है, एंड शेली लिखा था इन डिफेंस ऑफ पोइट्री. So, in defense of poetry by Shelley is a response to Peacock's 4 ages of poetry. 4 एज के बारे में बात किया था कि 4 ages of poetry. ओके, मेरे क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा. Then Arthur O. Lovejoy. ओके, these are the critics. ऐसे critics आप शायद सुने नहीं होंगे, but these are very very important. Arthur O. Lovejoy on the discrimination of romanticisms. He was a modern critic, but he has said a lot of important things and challenging things on romantic literature. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, so these are some important ideas that I just shared with you. So prepare yourself and come to our KTS Academy soon. जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए. ठीक है, सो आई विल कम बैक इन अदर क्लासेस. आवर क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो प्लीज़ कम सून. ठीक है, एंड आज के लिए बस इतना ही. हमारा सिलेबस चल रहा है
और जो एग्ज़ाम है CGPSC AP के लिए उसका काफ़ी बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, हमें टाइम स्लोली हम प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन स्टेडीली हो रहा है। जो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं, वी पिक अप ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी मेटाफोरिकल और रेटोरिकल एक्सप्रेशंस और क्रिटिकल इंसाइट्स। रोमांटिक व्यूज़ अगर पढ़ रहे, रोमांटिक पोइट्री अगर पढ़ रहे तो रोमांटिक में क्या क्या चीज़ें हैं, रोमांटिक क्रिटिसिज्म सभी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखाया इस वीडियो में, ठीक है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड एंड एब्सेंटली रिलेटेड टू CGPSC सिलेबस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट यू सून। थैंक यू।